then Node.js, then Express.js, then MongoDB. That is a final mock interview. Next week. Okay. सबको पर्सनली भी बताया मैंने जब उनका मॉक इंटरव्यू शुरू था. तो थोड़ा सा ना अच्छा प्रिपेयर करो, आपको ही फायदा होगा भाई, मेरे लिए कुछ नहीं चल रहा है. अगर आप अच्छा आंसर दे पाएंगे तो देखो ऐसे समझ में आता है आपको भी, खुद को भी, अरे हम आंसर दे रहे हैं कि नहीं, क्या डिफिकल्टी. तो फिर आप खुद का एनालिसिस करो एंड प्रिपेयर अगेन. फाइन. सो नाउ तो आपको कैसा लगता है आपका एक्सपीरियंस? You need to prepare. Okay, check everybody personally. This is not a platform to discuss everybody's progress. Personally we can discuss. ठीक है. So now next topic, RESTful web service. Is screen visible? Yes, sir. So let's understand in this session what is web service. Okay, features of web service versus web application, web service components, then web service architecture, types of web service, SOAP based and RESTful web service. So my friends, let me tell you the scenario. You all access the websites, right? You know, suppose you are doing the shopping online from the Amazon website, amazon.com. Now, after adding the products in a cart, you check out, right? After entering the payment details. So once you check out, okay, Amazon does not process your payment. Amazon internally connects with the payment UPI website, correct? And that page is coming, correct? And on that page, then you are getting the transaction, okay, status, whether it is successful or fail or whatever, right? And then again, control is written back in Amazon, correct? So means what? Internally, Amazon is connected to the payment service, okay, website. It can be not website, we cannot say website, we can say payment service method. Method बोल सकते हैं, उसको हम बोलते हैं UPI, okay, Uniform Payment Interface, targeting method. So whether you are going for, if you are going for internet banking, यानी कि अगर आप इंटरनेट बैंकिंग से पेमेंट करें तो फिर वो वेबसाइट को कनेक्ट कर, यानी कि बैंकिंग वेबसाइट पे जब आप जाते हैं वहां पेमेंट करो, वो बात नहीं कर रहा हूं मैं. तो यानी कि जो पेमेंट गेटवे से आप पेमेंट कर रहे हो, ओके, और क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से पेमेंट कर रहे हो, तो इन दैट केस, ओके, internally it is using some PayPal or PayUI or whatever, right? And using that PayPal or PayUI, your payment is processed.
Means it is not Amazon who is doing your payment. Okay, आपका payment PayPal के through process होता है. यानी कि whatever the payment you do, that is PayPal. तो means internally Amazon application is connected to the PayPal or PayUI. And again in turn PayPal और PayUI also आपका payment नहीं करता, वो तो facility देता है. Okay, payment process करने के लिए. तो आप वो PayPal और PayUI internally आपके banking को connect करेगा, क्योंकि आपका account बैंक में है ना भाई. इस PayPal बैंक नो, PayUI भी बैंक नहीं है, वो तो एक gateway. That is a gateway. So means Amazon calls the PayPal or PayUI and PayPal or PayUI calls your bank. Okay, and फिर बैंक से आपका अमाउंट डिडक्ट होगा, वो भी अगर अवेलेबल है तो, और फिर वो रिस्पॉन्स जाएगा बैंक से पेपल को, पेपल फिर रिस्पॉन्स देगा अमेजोन को, और फिर अमेजोन आपको दिखाता है कि हाँ सक्सेस और फेल हो जो. तो नाउ इज इट अ केस दैट कि पेपल एप्लीकेशन जो भी है, पेपल एप्लीकेशन इट इज डेवलप इन अ सेम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन विच अमेजोन इज डेवलप? नो. Okay, they are developing different technology, they are running on different platform, they are running on different operating system. PayPal server किसी दूसरे मशीन पे रन होगा obviously real time में. Okay, and it might be created in different technology. Okay, similarly PayPal internally calls the banking application. So banking application is not developed in the same language in which PayPal and Amazon, and also banking application running on banking server. तीन अलग अलग सर्वर है. एक Amazon सर्वर जिसको आप एक्सेस कर रहे हो. ओके, Amazon internally, Amazon एक एप्लीकेशन है, वो इंटरनली PayPal एप्लीकेशन को एक्सेस कर रहा है, which is running on some another server remotely. And PayPal internally is connecting to banking. So now this scenario, if you check, okay, so that we can not develop simply using website. क्योंकि वेबसाइट नहीं है, यानी कि इंटरनली Amazon.com एक वेबसाइट है, लेकिन Amazon जो एप्लीकेशन है सर्वर साइड पे PayPal को कनेक्ट कर रहा है. आप PayPal की वेबसाइट को एक्सेस नहीं करते, आप Amazon के वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हैं, और PayPal इंटरनेट बैंकिंग को कनेक्ट कर रहा है. तो नाउ व्हाट इज दिस, हाउ इट कैन बी अचीव, यानी कि दिस इज अ कम्युनिकेशन बिटवीन टू डिफरेंट एप्लीकेशंस, heterogeneous applications which are different in different technologies, they are running on different operating system. Okay, so now this we can achieve with the help of web service. Okay, solution is only web service. So see here, web service, okay, is only the solution to achieve the communication between heterogeneous type applications. So that is same thing is mentioned. The web applications are being developed using variety of programming platform or technologies, .NET, Python, Java, Node.js, correct? And front end पे Angular, React, Next.js, Vue.js. Such a heterogeneous applications need obviously some sort of communication to happen between them. जैसे कि अपने अभी देखो real time example हमने discuss किया. Amazon needs to connect to PayPal for payment processing. PayPal needs to connect to the banking. So now this communication is required between PayPal, banking, and Amazon. So these applications need not be developed in the same programming language. They need not be run on same machine. They are running on different server machines. They are developed using different technologies. Their platforms are different. So still we want from business point of view communication between them. So solution is only web service. तो इस केस में आप वेब सर्विस यूज कर रहे हैं, तो आप जो HTML, CSS, JavaScript वो वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए यूज कर रहे हैं, React, Angular वो फ्रंट एंड वेबसाइट डेवलपमेंट. ओके, बट अगर ये सिनारियो है तो यहाँ वेब सर्विस ही सोल्यूशन. तो सोल्यूशन इज वेब सर्विस व्हिच प्रोवाइड्स कॉमन प्लेटफॉर्म फॉर applications which are developed using different programming languages. They are running on different technologies, different operating systems to communicate with each other. And that is what the web service is required. So this is a definition of web. I mean, there are multiple definitions of web service. So it is a software system for interoperable machine-to-machine communication. That is one of the definitions of web service. Second definition, it is a standardized medium which can be used to propagate communication between client and server application over the World Wide Web, means internet. And third definition, it is also a collection of open protocol and open standards which can be used to exchange the data between heterogeneous applications or systems. Okay, and it is a method of communication between two devices over the net. So these are multiple definitions attached to the web service. So let's understand. Okay, pictorial. Java wants to connect with Android. Android wants to connect with PHP. PHP wants to connect with .NET. .NET wants to connect with iOS and so on. Even आप यहाँ JavaScript भी include कर सकते, right? तो ऐसे अलग-अलग applications which are developed in different technologies, okay, they still require communication between them. So and that we can achieve only using web service. Therefore, today web service is in great demand.
ओके अगर आप आज देखते हो तो पूरा डेवलपमेंट वेब सर्विस के थ्रू हो रहा है, क्योंकि फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए रिएक्ट आ गया है, एंगुलर आ गया है, तो देर इज नो नीड फॉर क्रिएटिंग हेवी एप्लीकेशन यूजिंग सिंपली जावा डॉट नेट. सिंपली वेब सर्विस डेवलप किया जाता है अभी. तो रिसेंट जो ट्रेंड है मार्केट में, डेवलप वेब सर्विस विच इज इन द फॉर्म ऑफ ओके रेस्ट एपीआई, स्पेशली रेस्टफुल वेब सर्विस, उसको हम बोलते हैं रेस्ट एपीआई, वो भी हम सीखेंगे. एंड देन कॉल दोज इन फ्रंट एंड, रिएक्ट एंड एंगुलर. So these are some features of web service. So it is web service is used to achieve platform independent data transfer. This for web service, technology doesn't matter, operating system doesn't matter. On any platform using any technology, you can exchange the data through web service, and the data is usually originally transported in XML format, but now JSON is also possible. So that is what mentioned platform independent data transfer either using XML or JSON. And both XML and JSON, these are cross-platform. They can run on any operating system, okay, XML and JSON, and they can be used by any technology, whether it is Java, Python, .NET, JavaScript, okay, no problem at all. So therefore, it is highly interoperable. These web services are highly interoperable, and they are loosely coupled. Okay, there are two terms. One is a web service provider, which creates web service and serves that web service to the wherever it is needed, and second is web service consumer, where consumer wants web service to be used. So it is loosely coupled, means what? Web service is not tightly tied directly to the web service. So if it is required, consumer can use web service, otherwise no need. जैसे कि देखो आज आपका अमेजोन एप्लीकेशन पेपल यूज कर रहा है, तो उनको अगर कल लगता है कि नहीं मुझे पेपल नहीं यूज करना है, तो दूसरा कोई पेमेंट गेटवे इंटरफेस यूज करना है, ऑब्वियसली इट कैन बी डन. तो इट इज नॉट टाइटली कपल. ओके, तो लूजली कपल यानी कि इंटरऑपरेबल, प्लगेबल एंड आई मीन डिटैचेबल एंड अटैचेबल. तो यूज करना है तो करो, नहीं तो यूज मत करो. जैसे कि कंसिडर कि कल हम अभी देखो पेटीएम का क्या हुआ, राइट? तो पीपल आर नॉट यूजिंग पेटीएम, राइट? तो क्योंकि उनका कुछ फ्रॉड वगैरह हो गया, तो देन ऑल दिस प्लेटफॉर्म थ्रू विच पेमेंट वाज डन यूजिंग पेटीएम, दे कैन स्विच टू डिफरेंट टेक्नोलॉजी. तो ये प्लगेबल, इसलिए उनका खुद का वेबसाइट ओके चेंज करने की जो यूआई वो चेंज करने की जरूरत नहीं. Getting my point, बस वो निकाल देंगे. तो now coarse grain, natural method of defining coarse grain services, okay, that approach the right amount of business logic. So what is by coarse grain means it is not fine grain. Okay, it is not fine grain. So this is nothing but okay, you are actually communicating with the web service, okay, using any technology, okay, using any programming language, that is called coarse grain. Means it majorly focuses on okay RESTful, I mean rather than RESTful, I will say web service methods, okay, their protocols which are totally cross platform, and therefore it is called coarse grain services. Okay, फाइन ग्रेन जो सर्विसेज होते हैं उनको हम बोलते हैं माइक्रो सर्विस. ओके, उनको हम क्या बोलते हैं? माइक्रो सर्विस. तो माइक्रो सर्विस और एक टेक्नोलॉजी जो कोर्स ग्रेन का आगे का वर्जन है. तो आपने सुना होगा माइक्रो सर्विस, ऐसा कुछ टर्म सुना है क्या टेक्नोलॉजी में? So coarse grain and microservice. So microservices are more flexible. Okay, coarse grain are less flexible. So that is what natural method of defining coarse grain services. Okay, that approach the right amount of business logic. And okay, it can work synchronously or asynchronously. Okay, so already you are quite familiar with what in by synchronous and what asynchronous. Next, what is the difference between web service and web application? Web application is website. Okay, web service means it is basically application component, and web service does not require UI. Web service को कभी भी UI नहीं होता, और वेबसाइट में हर चीज UI के थ्रू दिखाया जाता है, यानी कि वेबसाइट स्क्रीन एलिमेंट्स होता है. तो वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ स्क्रीन एलिमेंट्स. ओके, नेक्स्ट, web service can be accessed by any programming language on any platform, but web application always accessed by web browser. Okay, without web browser you cannot access website. Web service in which client of the web service can be any application. It can be web application, it can be mobile app. Okay, whereas जो वेब एप्लीकेशन यानी कि वेबसाइट होता है उसका क्लाइंट हमेशा वेब ब्राउज़र होता है. वेब सर्विस serves data in any format, plain text, HTML format, even XML format, even JSON format.
but website always serves data in HTML format. Correct? तो वेब सर्विस इज मेंट फॉर कंप्यूटर टू रीड, यानी कि एक एप्लीकेशन दूसरे एप्लीकेशन को कॉल करता है इंटरनली, तो इसलिए कंप्यूटर टू रीड एप्लीकेशन. ओके, बट वेबसाइट्स आर यूज्ड बाय ह्यूमन बीइंग, सो देयरफॉर ह्यूमन टू रीड. ओके, एग्जांपल ऑफ वेब सर्विस गूगल एपीआई, फेसबुक एपीआई, आपने कुछ सुना होगा. एंड वेब एप्लीकेशन google.com ये वेबसाइट हुआ, facebook.com ये वेबसाइट हुआ. ओके, लेकिन गूगल एपीआई, फेसबुक एपीआई ये वेब सर्विस हुआ. So these are the clear-cut differences between web service and web application. Any confusion, online people? No, sir. No, sir. Components of web service: SOAP, WSDL, WSDL, and UDDI. Let's understand what is by SOAP. SOAP is a protocol, simple object access protocol. It is a XML-based protocol, but it is a cross-platform. This SOAP protocol works on any operating system, Windows, Linux, Macintosh, no problem. Only the one restriction is there, so that SOAP can understand data only in XML format. So therefore, it is called XML-based protocol. If the data is not in XML format, SOAP doesn't work. So SOAP can understand data only in XML format. So therefore, it is W3C recommendation to achieve the communication between two applications. And it can be used with any programming language, Java, .NET, Python, PHP, or even JavaScript. So next is WSDL. So whenever you create a web service you can create using any programming language. Absolutely any programming language, Python, .NET, Java, JavaScript. Okay, no problem at all. But then if you want this web service to be accessed by any technology, any application which is developed using any other technology, how it is made possible? With the help of WSDL. What is WSDL? It is an XML document. WSDL is an XML document, okay, in which we define the name of your web service method. यानी कि आपका जो वेब सर्विस मेथड है उसका नेम, which parameter does it take, those parameters. Okay, these all information we store in a WSDL. So therefore it is called web service description language. This it is a language for describing web service. यानी कि जो भी आप वेब सर्विस डिजाइन करेंगे, डेवलप करेंगे यूजिंग एनी टेक्नोलॉजी, तो उसका जो नेम है, ओके, मेथड का नेम, उसके पैरामीटर का नेम, और वो रिटर्न का करते हैं उसका टाइप, तो एंड यूजिंग व्हिच मेथड इट इज एक्सेसिबल, ऑल दिस थिंग्स we specify in the XML format. And that is called web service description language. It is an XML document which contains information about web server, such as method name, method parameter, and how to access it. Okay, and like this, for every web service you create XML document. यानी कि जितने भी आप वेब सर्विस डिजाइन करते हो, डेवलप करते हो किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो उसको हम एक कॉमन प्लेटफॉर्म देते हैं XML के रूप में. XML में हम उसको डिस्क्राइब करते हैं. तो ऑल सच WSDL document, which are XML document, are a part of UDDI. Okay, and this WSDL acts as an interface between web service application. यानी कि कोई भी क्लाइंट को अगर वेब सर्विस एक्सेस करना है तो पहले उसको WSDL आना चाहिए, WSDL मालूम होना चाहिए. WSDL क्या है? WSDL का एक्सेस होना चाहिए. So if it accesses WSDL, then it works. Okay, and it is pronounced as WSDL. So what is UDDI? देखो आगे, Universal Description, Discovery and Integration. What do you mean by that? It is a collection of WSDL. मैंने अभी बोला कि suppose you have multiple web service methods which you develop using different programming language. तो हर एक का description देना पड़ता है using WSDL. So there might be multiple XML documents. In each XML document you have described that corresponding, okay, web service, its methods, okay, and how to access it. So what is UDDI? Universal Description and Discovery Integration. So it is used to, okay, connect to the web service. UDDI is used to connect to what website? It is used for publishing the web service. And once it is published, it is used for lookup. यानी कि कोई client जिसको web service है, client will look up web service using UDDI. It's same like DNS. DNS यानी कि domain naming server, right? Domain naming registry मालूम है आपको? जहाँ वेबसाइट रजिस्टर करते हैं, यानी कि आपने कोई वेबसाइट डेवलप किया तो उसको आपको यूनिक नेम देना है. So then that is done using domain name. तो same है. तो डोमेन नेमिंग रजिस्ट्री क्या करता है? वो पब्लिश करता है कि वेबसाइट है. फिर कोई भी, यानी कि आप आपके वेब ब्राउजर से कोई भी वेबसाइट आए, पहले वो डीएनएस में रजिस्टर है क्या नहीं वो चेक किया है. इसको बोलते हैं लुकअप मेथड, यानी कि लुकअप किया जाता है. यानी कि मैं अगर yahoo.com एक्सेस करा तो पहले वो डीएनएस में लुकअप किया जाएगा. अगर वहां है रजिस्टर तो फिर वो उस करस्पॉन्डिंग सर्वर को याहू सर्वर को कनेक्ट होगा. अदरवाइज आपको एरर मिलता है कि ऐसा कुछ वेबसाइट नहीं है, नो सच ए वेबसाइट.
So same thing is here. So whenever, okay, you develop a web service as a server side person, so that web service you need to publish or register. That we do using Wdc. So standard for describing, publishing, and also looking up, discovering the web service that are provided by the particular service provider. Okay, directory is collection of web service described by wisdom, which contains information about web service. Okay, and it provides also a standard specification which can be helping us to host the information over what web service. तो ये UDDI का मतलब है. So this is the architecture of the web service. So if the web service is created by, okay, server side person, this service provider, उसको हम बोलते हैं web service provider. So the service provider creates a web service, then also it creates a wisdom. Wisdom यानी कि वो जो web service है, जिस language में बनाया है, programming language में, उसका description देना पड़ेगा. That is done with the help of wisdom, which is XML document. Then publish that XML document, which is web service, by registering it in the service registry. That is called publish. Now, once it is registered successfully, okay, then any client who wants to access that web service can look up that web service into the service registry. और अगर वो service registry में मिला, okay, then service provider will bind that web service to the service request. तो यानी कि ये जो last वाला है, वो होगा. Okay, service provider binds that web service to the service provider. Any doubt? And then that web service executes on client side. Next. So ये हो गया basic of the web service. These are the two types of web services: SOAP-based web service and RESTful web service. Let's understand what is SOAP-based web service. It is again, okay, transport independent, or we can say, okay, technology independent, okay, service, because it is a SOAP protocol and SOAP is cross-platform. It is a cross-platform, and only the difference is, okay, it can understand data only in XML format. The SOAP messages will be sent in XML format. Each message has something that is known as XML document. Advantages of SOAP-based web service: platform independent, language independent, and programming language independent. And it can run on any operating system. And one more great advantage, by default, SOAP-based web service has a security by its own. Okay, इसका खुद का self security, that is called WS security. That is the greatest advantage. But it has a limitations. It is slow. Why slow? Because consider आपके JavaScript प्रोग्राम में किसी वेब सर्विस जो SOAP वेब सर्विस है इसको एक्सेस कर रहा है, राइट, बाय कनेक्टिंग टू द विजिटर, जो आप सर्विस प्रोवाइडर से सर्विस प्रोवाइड करके वो पब्लिश करता है रजिस्ट्री में. तो रजिस्ट्री में आपका एप्लीकेशन जो है वो कनेक्ट करेगा और लुकअप करेगा, हाँ ये वेब सर्विस है क्या. तो इफ इट इज देयर, ओके, तो SOAP वेब सर्विस क्या बोलता है कि जो डेटा मैं सेंड करता हूँ, ओके, इट इज ऑलवेज इन XML फॉर्म. So now if your program is in JavaScript and XML, both are different. They are not same languages, right? अगर डेटा JavaScript के रूप में आ रहा है तो वो समझ जाएगा, ओके, आपका JavaScript, लेकिन ये डेटा XML के रूप में, तो फिर यहाँ क्या करना पड़ता है? तो you require XML parser. What is XML parser? XML parser is a program, okay, which is written in a programming language like JavaScript, Java, .NET, whatever. So that XML parser program reads the information from the XML document and converts that into that programming language. यानी कि अगर पार्सर आपने जावास्क्रिप्ट में लिखा है तो जो XML का डेटा है वो पार्स करेगा, रीड करेगा और फिर वो जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट करके देगा, like this. So now every programming language in which you want to read the web service, तो खुद उस programming language में XML parser create करना पड़ता है. And whenever you create a parser, तो और एक program add हो गया, parser program, तो it will require resources like memory and CPU. Okay, memory and CPU. So therefore it requires more bandwidth and resource. That is a one drawback. Therefore it is slow. यानी कि you are reading, you are accessing the web service from the internet, and वो जो डेटा आ रहा है वेब सर्विस का XML में आ रहा है, तो XML का जो ट्रांसलेशन आपको आपके ऑब्जेक्ट के रूप में करना पड़ेगा, यानी कि जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट. That help is done by XML parser.
तो XML parser converts XML data into that programming language. जैसे कि अगर जावास्क्रिप्ट तो जावास्क्रिप्ट का ऑप्शन मिलेगा, वही प्रोग्रामिंग अगर जावा में किया है तो देन दैट एक्सएमएल डेटा विल बी कन्वर्टेड इनटू जावा. तो इसलिए वो जो पार्सर है वो खुद प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसी में बनाया जाता है. यानी कि जावास्क्रिप्ट एक्सएमएल पार्सर कैन नॉट बी यूज्ड इन जावा और डॉटनेट. डॉटनेट एक्सएमएल पार्सर कैन नॉट बी यूज्ड इन जावास्क्रिप्ट और जावा. So this is very important part. And it is WSDL dependent. To discover the web service, SOAP uses WSDL, Web Service Description Language. Okay. So next is RESTful Web Service, which is called representational state transfer, and it is architectural style, but not a protocol. यानी कि ये protocol based नहीं है, protocol independent है. SOAP based web service में एक ही protocol use होता है, which is that SOAP. बट यहाँ कोई भी प्रोटोकॉल यूज कर सकते हैं जो एप्लीकेबल है, लाइट वेट, मेंटेनेबल एंड स्केलेबल. सो एक्सपोजेस एपीआई फ्रॉम योर एप्लीकेशन इन अ सिक्योर, यूनिफॉर्म, स्टेटलेस मैनर, ओके, टू द कॉलिंग फ्लो. So this is how basically RESTful web service. Advantage is it is fast as compared to the SOAP, because for RESTful web service we don't require any XML parser, because data need not come in XML format. It can come but need not. Well, तो अगर वो दूसरे फॉर्मेट में आ रहा है जैसे कि प्लेन टेक्स्ट HTML, तो नो इशू. ओके, तो उसको पार्स करने की जरूरत ब्राउजर की होती है HTML को, राइट. तो लैंग्वेज एंड टेक्नोलॉजी इंडिपेंडेंट, ओके, written in any programming language, executed in any platform, and it still can work with SOAP. Supports different data format, plain text, HTML, XML and JSON. but SOAP जो है एक ही टाइप का डेटा वो है XML, but here variety of data. JSON usually today very popular, therefore REST API is very popular. These are some difference between SOAP and REST. SOAP is a protocol, REST is architectural style. Okay. SOAP web service can't use REST because SOAP is a protocol, and protocol SOAP अगर है तो data must be of XML. Okay. But RESTful web service can use SOAP. Okay. Therefore it is flexible because it can make use of any protocol like HTTP, SOAP, जो भी applicable. SOAP web service defines standard to be strictly followed. Strictly. But RESTful web service does not define such a standard like SOAP. SOAP web service does not define, it depends its own security. SOAP is by default secure. उसका खुद का लाइब्रेरी है, देखो. हाँ, ये इतना ही बताएगा, its own security. Okay, but RESTful service needs security measures from the underlying transfer. यानी कि अगर आप RESTful service HTTP से एक्सेस कर रहे हो तो HTTPS प्रोटोकॉल यूज कर सकते हैं, सिक्योर. SOAP consumes more bandwidth and resources. Okay, RESTful service requires less bandwidth and less resources. More, okay, it also supports XML data format, okay, which is SOAP. And in RESTful service, it supports variety of data format, plain text, okay, HTML, JSON, and so on. Okay. So this is all about my friend's web service. So tomorrow again we will discuss RESTful web service and then we will start coding. Let me take a attendance liya मैंने mock लिया. Tomorrow we'll see. You can leave the meeting. You join tomorrow. Bye bye.